अगर मौसम का जानकारी लेते हैं तो पहली तो बात है, एक पश्चिम विक्षोभ आज रात से नॉर्थ इंडिया को इफेक्ट करने लगेगा। ये सिस्टम जो आ रही है ये काफ़ी दिन ब दिन इंटेंस होता जाएगा और कल से परसों से लेके हमारा भारी वर्षा का कल से इनफैक्ट हमारा भारी वर्षा का चेतावनी है, खासकर पहाड़ी राज्यों में, जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ साथ हमारा 27 तारीख को, अभी कल से हमारा येलो अलर्ट शुरू हो जाएगा इन राज्यों के लिए और 27 तारीख को ऑरेंज अलर्ट होने का संभावना है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पास आएगा तो उसके साथ साथ जो प्लेन एरियाज हैं उसके एडजॉइनिंग रीजन्स में, जैसे पंजाब, नॉर्थ राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में धीरे धीरे बारिश शुरू होगी 27 तारीख से और साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी चालू हो जाएगी 27 तारीख से लेकर 27, 28, 29 तारीख तक। अगर दिल्ली एनसीआर का बात करें तो 27 तारीख से, जैसे मैंने बताया, प्लेन्स में थोड़ा बहुत बादल आ जाएगी, हल्की फुल्की बारिश होना शुरू हो जाएगी। ये दिल्ली के लिए भी एप्लीकेबल है और जैसे ये आगे बढ़ेगी 28, 29 तारीख को थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का भी पॉसिबिलिटी है। बाकी टेम्परेचर्स की अगर बात करें तो पूरा नॉर्थ इंडिया में ही अभी उम्मीद है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री थोड़ा बढ़ेगी अगले 2 दिन तक। उसके बाद जब ही बादल आ जाएंगे, पहले पहाड़ों में फिर प्लेन्स में, धीरे धीरे मैक्सिमम टेम्परेचर गिरने लगेगा। तो आपका 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, फिर 3 से 4 डिग्री घटेगा। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो अगले 4 से 5 दिन तक थोड़ा बढ़ने का ही संभावना है, क्योंकि धीरे धीरे मॉइस्चर आ जाएगी और मॉइस्चर के साथ साथ आपका मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर असर ज़्यादा होगी। If you see the weather over the country today, western disturbance is approaching the North Indian region. Associated with it from tonight, in fact from tomorrow morning, rainfall will increase, gradually start increasing over the western Himalayan region firstly, and that's why we have given heavy rainfall, more than 65 millimeter per day rainfall, up to 12 centimeter rainfall for the subsequent, that means from 25th, 26th, 27th and 28th. In between, we are expecting rainfall to increase further around 27th, and when it increases further, we'll give orange alert for the states of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. We are also giving from 27th, as the western disturbance comes closer, we are also expecting rainfall and thunderstorm activity to start over the plain regions of the associated plain regions of Punjab, Haryana, West Uttar Pradesh and North Rajasthan. And this thunderstorm activity will also increase on 28th along with the hill regions, and thereafter the activity will gradually start reducing. This weather is likely to bring changes in temperature also. In terms of maximum temperature, we are expecting increase in maximum temperature over the entire North Indian region during the next 2 days, and thereafter it is likely to fall when the clouds start to appear over the Indian region. This fall will first start over the hills, because the hill regions will get the rainfall and clouds and the thunderstorm activity before the plain regions, and subsequently in the plain regions, after 2 days, we are expecting maximum temperature to start falling. In the minimum temperatures, we are expecting gradual rise in minimum temperature throughout North India during the next 4 to 5 days, because when a western disturbance approaches, moist southerly warm winds approach, and that is what is likely to cause. Over the south peninsular India, we are expecting, and of course over the Andaman Islands, we are expecting a easterly wave. Quite deep easterly wave is coming, because of which thunderstorms are likely to be, and heavy rainfall to occur tomorrow over Andaman and Nicobar Islands. This system is likely to move westwards, and heavy rainfall is likely to come on 27th, 28th over Tamil Nadu as well as Kerala. Over northeast India, we are only expecting hailstorm activity and some thunderstorm activity, especially Arunachal Pradesh and East Assam today, and of course Sikkim, this entire northern part of the East India, and thereafter the weather is likely to decrease over this region.
especially for Delhi NCR? For Delhi, if you see, the same pattern is going to be applicable in the sense that maximum temperatures are likely to increase slightly during the next 2 days. Thereafter, maximum temperatures is likely to fall by 2 to 3 degrees Celsius as the clouds appear. Some light drizzle is likely to start from 27th, and minimum temperatures will continue to have a slightly increasing trend during the next 4 to 5 days.